Hello students, let's talk about neoclassical age. Neoclassical is now the word neoclassical has two words. Neo, which is derived from the Greek word, means neo. Neos meaning young or new. Or classical is derived from the Latin word classica, meaning related to ancient Greek or Latin models of the art forms. So, neoclassicism is a school of literature that lays emphasis on the revival and restoration of the classical standards of literature. Neoclassical का क्या मतलब है? रिवाइव करना, नियो क्लासिकल स्टैंडर्ड्स को रिवाइव करना. ठीक है, क्लासिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ लिटरेचर को रिवाइव करना जो है, that is called neoclassical. So this period is also known as Augustan age, as the literary splendor of this age resembled brilliant and glorious age of Emperor Augustus Caesar of Rome. So it is also popularly known as the 18th century or the age of Pope and Johnson. ये सब एक ही पीरियड है. Age of Pope और Johnson, 18th century poetry, Augustan age, neoclassical age. Hmm? So this age covers a wide time span with diverse trends and innovation. तो इस पीरियड में बहुत सारे स्पैन्स हैं, टाइम स्पैन्स अलग अलग तरह के हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ट्रेंड्स, बहुत सारी इनोवेशंस हुई. बट देयर इज एन अंडरलाइंग यूनिटी which binds the literature of various periods of this age. In 18th century, there was a general public stability after the long period of political turmoil. इससे पहले बहुत ज़्यादा राजनीतिक हलचल थी, लेकिन इस पीरियड में चाहे लिटरेरी स्पैन अलग अलग हैं, लेकिन एक स्टेबिलिटी है, स्थिरता है, which culminated in the restoration period of Stuart monarchy. Stuart monarchy. मोनार्किकल गवर्नमेंट हो गई थी ना, हम सीक्वेंस में ही पढ़ते चले आ रहे हैं. रेस्टोरेशन पीरियड में चार्ल्स सेकंड वाज अगेन ब्रॉट टू द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड, सो द मोनार्किकल गवर्नमेंट वाज देयर. देन आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्राइव, बहुत ज्यादा स्ट्रगल के बाद एट लास्ट क्या हो गया, लिबर्टी हो गई, सोसाइटी वाज एट पीस, है ना. सो द एजुकेशन, द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन gave a helping hand to the restoration of peace and prosperity in all spheres of life. A liberal, peaceful, prosperous age was there. And the most outstanding feature of this age is that England saw a rise of clubs, coffee houses, which was a hub of the social life. But at the same time, it was also a hotspot of literary and political affairs. So coffee houses, क्लब्स, तो ये सिर्फ एक सोशल गैदरिंग के लिए ही नहीं होते थे, बल्कि लिटरेरी और पॉलिटिकल डिस्कशंस के लिए, डिबेट्स के लिए भी होते थे. सो इट वाज एन इरा ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एनलाइटनमेंट, एंड विद लिटरेचर बिकमिंग अ मीडियम for dispersing knowledge among the masses. So from the perspective of literature, it was indeed a very fertile age. अगर लिटरेचर के एंगल से बात करें तो ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी. It produced eminent scholars and literary figures such as Pope, Johnson, Burke, Swift, Addison, Steele, Goldsmith. ये सब राइटर्स इसी एज के हैं. So this age is also called the age of prose because there were revolutionary upsurge of prose writings in the form of periodical essays, political pamphlets, political satires, prose fiction. Addison, Steele, Goldsmith, they were the renowned essayists of this age. The Tatler, the Spectator were the outstanding periodicals in this period.
Swift का Battle of Books, which was published in 1697. Gulliver's Travels, which was published in 1726. A Tale of the Tub. Defoe का Robinson Crusoe, Captain Singleton. These are these important works. They are important works of this age. The poets of the age composed outstanding poetry based on classical conventions. क्लासिकल कन्वेंशंस पे पोइट्स ने बहुत अच्छी पोइट्री लिखी है ना. मैथ्यू प्रायर, जॉन गे, एडवर्ड यंग, थॉमस पार्नल, जेम्स थॉमसन, विलियम कॉलिंस, थॉमस ग्रे, they were the leading poets of this age. Pope occupies the highest rank in the 18th century poetry. His important works, the Essay on Criticism, The Rape of the Lock, is the outstanding work from the pen of Pope. The Dunciad, the Essay on Man. These are the important works. So let's see the general features of this age. It marks supremacy of reason over belief. है ना, रीजन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, इंटेलेक्ट को इमोशन से ज्यादा देते थे, माइंड को पैशन से ज्यादा देते थे. It is popular. This is popular because of the scholarly allusions from religious, biblical and classical literature. Allusions समझते हो? ALLUSIONS. Allusions मतलब references देते थे. Then rationalism is an important feature of the neoclassical literature because the writers of this period, they considered reason as the foundation of learning and knowledge. It is didactic and moral in nature. Realism is yet another key feature of this age. It faithfully mirrors the contemporary age of that time. Then it strictly adheres to the classical conventions in poetry. It also saw the revival of heroic couplets. Then objectivity is another important feature of this age. Neoclassical writers seldom express their personality through their works. They are thoroughly objective. So it's clear to you. Then another is romanticism. Romanticism is just opposite of neoclassical. Just as neoclassical writers, they give more importance to reason than passion. Romantics, they give more importance to passion than reason. So the year 1798 marks an important milestone in the literary history of England. So it was with the publication of Lyrical Ballads, which was a collaborative work of William Wordsworth and S.T. Coleridge, that the Romantic period started. The publication marks a dawn of new literary era in England, which is called Romanticism. So it was born as a revolt against the political, social, religious, literary conventions of the contemporary times. The French Revolution of 1789, which was centered on the ideas of liberty, fraternity, equality, had considerable influence on English literature, on what to say, English Romantic movement. Man-nature relationship was explored by the Romantics. Romanticism advocated the simplicity of theme, feeling, expression. It laid emphasis on the concept of creativity. Romantics
emphasize the concept of creativity instead of what? Instead of reality. है ना? Instead of the neoclassical idea of imitation as the basis of creative art. The poetry of this period is, of course, highly subjective in nature, and it is based on the themes of nature and natural poetry, natural beauty. Nature and natural beauty are the basic themes of romanticism. Sensitive portrayal of deep passions and emotions, and an intense love for freedom. So, this poetry also shows an inclination towards supernaturalism, medievalism, Hellenism. Hellenism क्या होता है? Love for Greek art and literature. Pantheism, man और nature का relationship. William Wordsworth, Coleridge, Robert Southey, George Gordon Byron, Shelley, John Keats. They are the six great romantic poets. The great prose writers of this age are Charles Lamb, William Hazlitt, D. Quincy, Walter Scott. Wordsworth's approach towards nature is reflected through his poems The Prelude, Tinton Abbey, Solitary Reaper, The World is Too Much with Us. कॉलेज की इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर कुबला खां क्रिस्टबल दे प्रेजेंट इज आउटलुक these poems present his outlook towards nature. Shelley perceives nature as a source of optimism as is expressed in his poem Ode to the West Wind. जॉन कीट्स की बात करें तो he polarizes his experience between art and nature. There is a recurrent theme in his or on Grecian or to Nightingale also. And he polarizes. So let me give you a brief idea of again these romantic poets. John Keats, Shelley, Coleridge, Wordsworth. All of them are romantic. So we have studied here that romantics they give more importance to feelings and emotions. They are subjective. Their theme is to talk about nature and natural beauty. The main feature is they give more importance to expression, feelings. Again, there's classicals, neoclassicals, they talk about reality, and romantics, they escape from reality. Romantics, they escape from reality. They are subjective. They are not satisfied with the life as it is. Of course, their method is different. If we talk about Keats, he was a worshipper of beauty. In each of his odes, he has a quest for permanence. He is in search of finding the world that is relatively permanent. If we see Ode to Nightingale, he feels that the Nightingale song is so musical. है ना? Because Nightingale is happy. है ना? That's why the song is so acoustic. He wants to reach that world of Nightingale. He goes there with the help of his imagination. First he feels with the help of wine, then with the help of poetry. Wine also he wants a special sort of wine. He reaches there, he stays there for some time. But when the ode is about to be over, he feels no, no, no. Escape is not possible. He will have to live on this hard crust of life where an average man lives. So he says, forlorn, the very word rings like a bell that tolls me back from thee to my own self. उसको एकदम झटका लगता है कि अरे अरे ये तो इमेजिनेशन में सोच रहा था नाइटिंगेल के पास है, यहाँ तो कोई नाइटिंगेल नहीं है, वो तो बिल्कुल अकेला है. क्या मतलब?
कि उसको लगता है कि नहीं नहीं एस्केप पॉसिबल नहीं है, उसको वापस आना पड़ेगा। इसी लाइफ में सारी कुछ सहना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, है ना। तो ही ट्राइज, देन ही फील्स कि ना ना वापिस आना पड़ेगा। ऐसे ही ऑर्डर ग्रेशियन में भी उसको लगता है आर्ट में सब कुछ खूबसूरत है, सब कुछ परमानेंट है, रियलिटी में सब कुछ अच्छा नहीं है ना। रियलिटी यहाँ पर क्या है, द वर्ल्ड ऑफ टाइम, और वो आन जिसके ऊपर वो पिक्चर्स कार्व्ड है सब, उसको लगता है ये सब अच्छा है। बट टुवर्ड्स द एंड उसको लगता है कि ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी, ऑल दैट ही न्यू ऑन अर्थ, ऑल दैट ही नीड टू नो, कि खूबसूरत वही है जो सच और सच वही है जो खूबसूरत है ना। ब्यूटी इज ट्रूथ, सच सुंदर क्या है, जो सच है। सच क्या है, ये रियलिटी, ये लाइफ है। और ट्रूथ ही ब्यूटी है, क्योंकि ट्रूथ को अगर आप, ट्रूथ मतलब वही रियलिटी, अगर आपको उसको समझना आ गया, फेस करना आ गया, उसको हैंडल करना आ गया, तो अपने आप से ही सब कुछ खूबसूरत है ना। तो Keats once said also, anything seen or felt with intensity has to be beautiful, कि किसी चीज को गहराई से देखो और महसूस करो तो उस चीज को खूबसूरत होना ही पड़ेगा। सो ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ बिहोल्डर, नॉट इन एस्केप। Then see Wordsworth. Wordsworth was a poet of nature. He was a high priest of nature. है ना? His passion for nature was fixed in his blood, like that of silkworm to the mulberry leaf. जैसे रेशम का कीड़ा शहतूत के पत्ते के बिना नहीं रह सकता, उसी तरह से वर्ड्सवर्थ नेचर के बिना नहीं रह सकता। There are three different stages. First, physical love for nature, then philosophical love for nature, and then spiritual love for nature. तो लास्ट में जब हम बड़े होते हैं उसकी इतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, एज वी एडवांस इन ईयर्स, उसको लगता है सब कुछ नेचर में ही है, नेचर में ही एक स्पिरिट है, वही यूनिवर्सल स्पिरिट है, वही हमें गवर्न करती है ना। शैली इज द सुप्रीम सिंगिंग गॉड, है ना। ही इज शटल कॉक्ड बिटवीन द पास्ट एंड प्रेजेंट। पास्ट में वो उन बातों को याद करके दुखी होता है जो मिली नहीं, फ्यूचर में वो उन चीजों को याद करके दुखी हो रहा है जो मिल नहीं सकती, तभी उसके सॉन्ग्स जो हैं वो स्वीटेस्ट हैं। स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल अस ऑफ द सैडेस्ट थॉट, है ना। लेकिन वही अभी हम बात कर रहे थे, तो नेचर में उसको ऑप्टिमिज्म नजर आता है। वो टू द वेस्ट विंड में एंड में वो क्या बोलता है, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड। अगर अब विंटर है तो फिर क्या हुआ, स्प्रिंग कौन सी दूर है। विंटर इज अ सिंबल फॉर sorrows, sufferings, misfortunes, responsibilities, tensions, and spring is for joys, happiness, है ना। कि अगर आज दुख है तो क्या हुआ, फिर सुख भी आएगा, है ना? तो Shelley finds optimism in nature. Then Coleridge. Coleridge has interest in medieval arts, medieval literature. मेडाइवल इसमें क्या है, वो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स की स्टोरीज बताना, नक्काशी, क्राफ्ट्समैनशिप, स्कल्पचर्स, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा डेप्थ में इन्वॉल्वमेंट होती है उनकी और बताते हैं राइटर्स। तो Shelley present supernatural in a natural manner, so in that way he achieves willing suspension of disbelief. जब हम ही इज एन एक्सीलेंट स्टोरी टेलर, तो जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें लगता है कि फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, है ना। हमें होता है फटाफट पोएम खत्म हो जाए एंड तक और हमें पता चले कि जो स्टोरी सुना रहा है उसमें फिर आगे क्या हुआ। सो ही मेक्स अप, क्रिएट्स अ सस्पेंस, एंड वंस द स्टोरी इज ओवर, वंस द पोएम इज ओवर, तो हमें लगता है कि ओहो ऐसा तो हो ही नहीं सकता था, है ना। तो विलिंगली अपनी मर्जी से
हम अपने सस्पेंस को झुलाए रखते हैं, है ना? So that's how these romantic poets they uh, present their emotions, their attitudes in their poems. I hope you must have understood about romanticism also. Thank you.